Hi everyone, welcome to Success Series. This is Shrishti from Success Series, and today we are going to do your civics MCQs, which is from class 8, and we are going to do it for chapter 2, that is about understanding secularism. So if you have not had a look at our lectures, you will find the link in the description box. You can have a look at the chapter explanation and then begin with this set of multiple choice questions. Alright guys, so let's begin. Okay, so coming to the first question for the day, Hitler had persecuted dash during his reign in Germany. So during the times of Hitler, which community had been persecuted? This was because of religion. So your options are option A Muslims, option B Christians, option C Jews, and option D Hindus. So your time begins now. Please tell me what is the correct answer for this. It is a very simple question. हिटलर ने किन के अगेंस्ट बहुत सारी एट्रोसिटीज कमिट की थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा था, मरवाया था, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली द Jews community. So this is an example of anti-Semitism basically, okay. This is some kind of religious discrimination जहाँ पे Jews were considered less belonging basically you could say, okay, to that region, and that is why इनको बहुत ही large scales में बहुत ज़्यादा torture किया गया था, and these people had been killed because of religion. So it is an example of religious discrimination and religion based wipeout. और ये किसने किया था? ये डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने किया था. One of the autobiography of Adolf Hitler is also known as Mein Kampf. Okay, so this is some extra information that you can take from this question. Moving to question 2, Israel is a dash majority state. So we are talking about Israel. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी community majority में देखी जाती है? That is what you guys are supposed to let me know. Your options are Hindu, option B Jewish, option C Islamic, and option D Christian. So here begins your time. Quickly tell me which is the community that is dominantly living in Israel. Okay, Israel is one form of Western nation. So the correct option undoubtedly is B. Israel has a lot of population that are Jews by religion. It is very near to Palestine. You can have a look at the map. You will understand where these countries are located. The Gaza Strip and all the other kind of civil wars that you see, it is very predominant in this kind of regions. So it is a Jews majority state, and यहाँ पे correct answer आपका option B होगा. Moving to question 3, dash is one of the former colonies of France. So your options are Indonesia, South Africa, Morocco, and China. Time begins now. This is a part of your world history as well. So which one of these is a former colony of France? So guys, correct answer here is Morocco. Morocco was an earlier colony of France, and that is what you need to know from here. Moving to question 4, in Saudi Arabia, dash cannot practice their religion in public. Your options being non-Muslims, Muslims, government, and people. Time begins now. Very easy question. जब हमने सेक्युलरिज्म पढ़ा था, चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, सो वी हैड लुक्ड एट दिस एग्जाम्पल, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी द करेक्ट आंसर. So guys, the correct answer is definitely option A, because Saudi Arabia में there is a rule that one cannot construct temples, you cannot build church, anything, okay? The only thing that is allowed is mosques, because it is a Muslim dominant nation, and also it is not a secular nation, okay? What do we mean by secular? That is the essence of this chapter, and you
all already know it by now. So सऊदी अरेबिया में कोई भी नॉन मुस्लिम्स अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. पब्लिक प्लेसेस में दे कैन नॉट कंडक्ट एनी वर्शिप. ऑल्सो दे कैन नॉट बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ देयर चॉइस. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक ही रिलीजन को सपोर्ट करती है, विच इज बेसिकली इस्लाम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. Moving to question 5, separation of religion from the state is referred to as. So when the religion and the state are separated, what is that feature known as? Monarchy, democracy, option C secularism, and option D republic. Time begins now. It's a 10-second timer. Quickly tell me the answer, okay? जितना getting right the answer is important, उतना ही saying it quickly is also equally important. So 5 will have the correct answer as C. ये तो बहुत essence है chapter का. Okay, we have understood the meaning of secularism, जहाँ पे religion और state different रहते हैं. Okay, both do not interfere in each other. लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़ी बहुत interference भी है and बाकी में principal distance है in the form of separation. Okay, so religion and state are not one in one, जैसे हमने सऊदी अरेबिया में देखा. So is सऊदी अरेबिया secular country? Definitely no, because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो state है which is the government, it is actually supporting only one kind of religion. So it is promoting one religion which is the opposite of the meaning of secularism. Clear? If not clear, please look at the chapter explanation as well. Moving to question 6, all citizens are permitted by dash to practice their own religion. Options being state, Indian constitution, judiciary, and president. So look for the most appropriate option and your time begins now. Who permits the citizens of India to practice their own religion? ये right हमें कहाँ से मिली है? Who allows it? So it is definitely the Indian Constitution. So Constitution में एक right है, fundamental right, which is freedom of religion. Your job is to find out which articles cover freedom of religion. Is it Article 19? Is it Article 21? Is it Article 25, 26? So you guys need to find out freedom of religion. कौन से articles में covered है. It is basically a part of your fundamental right. It includes कि हम लोग कैसे भी अपने religion को interpret कर सकते हैं. We can follow the faith of our choice. Okay. It also allows you to convert if you are willing to convert into some other religion. But क्या forced conversions allowed है? क्या religion में, freedom of religion में, can somebody snatch away your religion and tell you to practice another religion? Definitely not. Okay, so we have equality of religion and we have the freedom to propagate and practice the religion of our choice. That is because of Indian Constitution's fundamental right. Moving to question 7. In a secular state, one religious state does not dash the other. So secular state में what is the feature? It does not support, it does not discriminate, it does not follow, or it does not resist. Time begins now. थोड़ा सा confusing question है between two options, but please pick the most closest one. So in a secular state, one religious state will not discriminate against the other. सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल में, हिटलर के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स नहीं बिल्ड कर सकते, नहीं प्रे कर सकते, राइट? सिमिलरली हिटलर, ही वॉज persecuting the Jews, so they were not allowed to survive here. So there was discrimination. But अगर आप एक secular country को belong करते हैं, so every religion, be it Islam, be it Hinduism, be it Buddhism, be it Christianity, or any other religion for that matter, everything will be looked upon as being equal. So we are all humans first. Humanity is the biggest religion. That is what we consider in India. Moving to question 8, dash are not allowed to celebrate the festivals of any particular religion to promote secularism. So your options are private schools, government schools,
मदरसाज एंड ऑप्शन डी इज पाठशालाज. सो किन में आपको कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन की सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री. टाइम बिगिंस नाउ. टेल मी द करेक्ट आंसर. जिन्होंने भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा है दे शुड गेट दिस करेक्ट वेरी वेरी इजीली एंड वेरी वेरी क्विकली. It is a very simple question. So the correct answer is definitely B. Private schools में it is allowed but government schools में, ताकि ऐसा नहीं हो कि government which is the state एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है इसीलिए कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स अलाउड नहीं है. दे कांट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन. दे कैन नॉट सेलिब्रेट इट. मॉर्निंग असेंबलीज जो होती हैं इनमें भी इनको ये सारी चीज़ें या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के सपोर्ट में कुछ भी करना अलाउड नहीं है बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म. सो इट विल डिफीट द फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म, इसीलिए ये अलाउड नहीं है. Moving to question 9, the tyranny of majority people can result in dash of religious minorities. So what can majority do to the minorities? Education, discrimination, freedom and biasness. Moving to the time has begun. सोचिए मेजॉरिटी पीपल्स टायरनी विच इज some kind of authoritative rule, it can result in the discrimination. क्योंकि क्या होगा जो मेजॉरिटी में है वो लोग ऑब्वियसली अनईक्वली ट्रीट करेंगे माइनॉरिटी को. तो इससे क्या होगा देयर विल बी अनईक्वल ट्रीटमेंट विच इज द वेरी मच मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ. So that is why to avoid all this kind of things, we have fundamental rights and we have constitutional supremacy. कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया गया है उसे बहुत ही अच्छे से एंड इन ट्रू स्पिरिट्स फॉलो करना है. राइट. जुडिशरी विल हेल्प यू टू एनफोर्स. एजुकेशन डेफिनेटली इज द रॉन्ग ऑप्शन. फ्रीडम तो होगी नहीं माइनॉरिटीज की. बायसनेस इज जस्ट अ basic thing that can happen against the minorities, but discrimination is the larger picture. Moving to question 10, the government of India does not support anyone. Is it democracy, monarchy, religion or judiciary? So your time begins. Yes guys, आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हो. Everybody has done this chapter properly. So some more questions to go. Be enthusiastic and answer it all. So question 10 obviously correct answer is religion. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिख्स, हिंदूज, ओके, मुस्लिम्स, एवरीबडी, क्रिश्चियंस, यू विल सी अस फॉलोइंग all kind of religion and all kind of festivals. Parsis, Buddhism, Jainism, everything is here. Moving to question 11, dash is an example of government office. Restaurants, police stations, housing society and private schools. Easy question, time has begun. जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से एक गवर्नमेंट ऑफिस है. Which one? Very very easy. Something that maintains law and order in the country, which is the police of the nation. Restaurants are private. Housing societies are also private, can be government owned also, but government offices, police stations, and private schools are again private. Moving to question 12, in dash, there are upper castes who dominate lower castes. So it is Jainism, Judaism, Parsis or Hinduism. टाइम बिगिंस नाउ. कौन से रिलीजन में आपको कास्ट फीचर देखने को मिलता है? द कंसेप्ट ऑफ कास्टिज्म इज वेरी डोमिनेंट इन दिस रिलीजन. विच रिलीजन इज इट? सो यू गाइज विल ऑल बी वेरी वेरी अवेयर बिकॉज इट इज अ वेरी डोमिनेंट फीचर इन इंडिया. What is the dominant feature that I'm talking about? I am talking about the feeling of caste based differences, which is casteism. Okay. सो ये इसको एंशियंट टाइम्स में क्या कहते थे? वर्णा सिस्टम कहते थे, जाति सिस्टम कहते थे. ओके. इवन टुडे वी हैव दिस कास्टिज्म दैट इज प्रिविलेंट, जहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन बर्थ लोगों को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट डोमेन्स. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज अ रिजल्ट ऑफ कास्टिज्म कि क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ के, ही वॉज अ हिंदू, ही वॉज बॉर्न अ हिंदू,
but he willingly converted into Buddhism. Okay, so you guys need to remember this. B.R. अम्बेडकर ने अपने रिलीजन को चेंज कर लिया था इनटू बुद्धिज्म, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था कि बुद्धिज्म इज एन इक्वल रिलीजन, बट हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन different sections of caste. Okay, and B.R. Ambedkar, he himself was of the महर community, जो कि एक लोअर कास्ट कम्युनिटी कंसिडर की जाती है. इट इज अराउंड द रीजन ऑफ महाराष्ट्र. ये सब आपने पढ़ा है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट टू यू. Moving to question 13, Indian Constitution allows religious minorities to set up their own courts, educational setups, police stations, and government schools. Time begins now. So Indian Constitution में religious minorities को एक special privilege दी गई है. And what is that special privilege? So yes guys, you all are correct and the correct answer is educational setups. तो आपकी ड्यूटी है आज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को आप देखोगे ऑफ द फंडामेंटल राइट. डज इट टॉक अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इनको कहा गया है कि आप अपने कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हो एंड यू कैन प्रैक्टिस थिंग्स ऑफ योर चॉइस, ताकि इनका कल्चर प्रिजर्व्ड रहे. ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम? आप तो कहें कि वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी रिलीजन. यहाँ पे हम लोग इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दे आर अ माइनॉरिटी, तो ताकि इनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और ये लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, ये लोग डोमिनेट नहीं हो. दैट इज वाई गवर्नमेंट अलाउज देम टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स. Moving to question 14, Dash is a former colony of France. So South Africa, Algeria, China or Indonesia. Time begins now. This is also mostly about your world history. जब हम लोग colonialism पढ़ेंगे, so we will understand that. And the correct answer here is option B. Algeria is a former colony of France, not the other countries. Moving to question 15, very easy question. For Sikhs, wearing a dash is an important part of religion, so they can avoid helmets, kurta, turban, uniform or shirts. Quickly, time has begun. jaldi se bataiye. You guys have seen it always. Very easy. Okay, we always see it in India. So this is an example of पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. एंड यहाँ पे टर्बन विच इज ऑल्सो नोन एज पगड़ी, इसे हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मानेंगे बिकॉज सिखिज्म में ऐसा कहा गया है दैट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट द सिख्स मस्ट ओबे, सच इज वेयरिंग अ टर्बन, कैरिंग अ किरपान. ओके, सो अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन लोग को थोड़ी सी फ्रीडम देती है. इट डज नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस अफेयर्स. सम स्टेट्स यू विल सी, दैट इज सम कंट्रीज यू विल सी, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है देर इज अ बैन ऑन हेड स्कार्व्स, राइट? वी हैड रेड अबाउट इट. बट ऐसा इंडिया में नहीं किया गया है बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड द कंट्री दे डू नॉट वॉन्ट टू एनक्रोच अपॉन एनीबडीज रिलीजन. वो लोग किसी के भी रिलीजियस राइट्स को स्नैच नहीं करना चाहते एंड दैट इज वाई दिस इज अलाउड. So moving to question 16, Dash is a republic country. Japan, United Kingdom, USA and China. So these are your options. Time begins now. What is India? Is India a republic country or not? लेकिन यहाँ पे तो इंडिया है नहीं ऑप्शन में. So please tell me which amongst this is a republic country. So yes guys, the correct answer is USA. रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है? सॉवरेंटी पीपल के पास रहती. कमिंग टू क्वेश्चन 17, डैश इज द मेन रिलीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. सो व्हाट इज इट? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुइज्म और हिंदुइज्म. टाइम बिगिंस नाउ. वेरी इजी क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है. I hope by now you guys have given the correct answer already. And yes, you smart children, obviously the correct answer is Islam because Saudi Arabia is a Muslim dominant nation. Okay? And यहाँ पे क्या है?
It is the opposite of secularism. Okay, Muslim domination. It is the opposite of secularism क्योंकि यहाँ पे state is actively promoting one religion and that is Islam. So this is your correct answer. Moving to question 18. Dash are allowed to celebrate festivals. Courts, parliaments, private schools or police stations. Time begins now. इजी क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है. हु आर अलाउड टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स? सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि इंडिया फॉलोज सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म का मीनिंग है कि गवर्नमेंट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. सो कोर्ट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पुलिस स्टेशन इज वेल. सो यहाँ पे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन नहीं देखने को मिलेगी. यू विल ओनली सी सिम्बल्स ऑफ यूनिटी. यू विल ओनली सी इंडियन सिम्बल्स such as flag or any kind of emblems that are related to entire India. Moving to question 19. Pledge of Allegiance takes place in the schools of China, USA, India or Japan. Time begins now. So where does this pledge take place? Which schools follow the pledge or the oath of allegiance? Okay, so the correct answer is option B, which is United States of America. Moving to the last question for the day, which is question 20. Tunisia was a colony of dash earlier. Is it Netherlands, France, Spain or United Kingdom? Time begins. Quickly tell me, Tunisia was a colony of which country? ऑप्शंस में आपको कौन सी ऐसी कंट्री दिख रही है जिनकी कॉलोनी थी तुनिशिया? सो इट इज फ्रांस. ओके, when we study history and world history, you will know more in details about this, and France is the correct answer. With that, we come to the end of this MCQ series. Thank you so much for staying connected to us. Also, please follow Success Series on Facebook, YouTube, Instagram as well as Twitter. Shower us with all your love and looking forward to meet you with the next set of lessons. Till then, take care. Bye-bye.